So welcome back to my new video. In this video, we are gonna discuss about the lysogenic life cycle of bacteriophages. Which bacteriophages? Lambdaphages. Because in the last video we have discussed about uh, lytic cycle of bacteriophage. In lytic cycle, T1 phages are the type of bacteriophages. हमें पता है T4 phages एक टाइप है बैक्टीरियोफेज की जिसमें लाइटिक साइकिल होती है जिसमें लाइटिक साइकिल होती है एंड दिस साइकिल this cycle uh, occurs in occurs in lambda phages. This cycle occurs in lambda phages, and lysogenic cycle life cycle of bacteriophage is also known as host and guest relationship. Host and guest relationship. This is also known as host and guest relationship because इसमें जो बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया में इंटर करता है जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में इंटर करता है तो इट जस्ट यूज टू इंटीग्रेट इनटू द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया डीएनए में इंटीग्रेट होके उनके साथ बैठता है. जैसे घर पे गेस्ट आके होस्ट एंड गेस्ट एक गेस्ट आता है आपके पास बैठता है. वो आपके घर पे कोई अगर करीबी गेस्ट है तो वो आपके घर पे 2-3 दिन बिताता है और वॉट एवर ही यूज टू. ऐसे ही होस्ट बैक्टीरिया है और गेस्ट यहाँ पर है बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज एक होस्ट सेल में जा रहा है गेस्ट बन के और उधर सिर्फ बैठेगा. जब तक उसको कोई अनफेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तब तक उसके जीन्स एक्टिव नहीं होंगे. इन लाइसोजेनिक साइकिल द बैक्टीरियोफेजेस जीन्स द जीन्स ऑफ बैक्टीरियोफेज आर इनएक्टिव आर टर्न ऑफ. हमारे पास एक जीन रेगुलेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है कि इन आवर बॉडी like we have two cells. Consider two cells, RBCs and liver cells. RBCs also have 46 chromosomes. Liver cells also have 46 chromosomes. Both have same genes, but why the liver cells are responsible for detoxification and RBCs are not? Because the genes for detoxification function are turned on in liver cells and are turned off in RBC cells. So this is a bit concept of cell regulation. तो इसी तरह हमारे पास इसमें भी जीन्स जो होते हैं फेज जीन्स आर इनएक्टिव का मतलब डू नॉट infect the do not infect the cell. जीन फेजेस के जो जीन होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं इसमें. इट मीन्स दे डू नॉट इन्फेक्ट द सेल. ये वायरस इन्फेक्ट नहीं करता इन लाइसोजेनिक साइकिल में जब तक वो लाइसोजेनिक साइकिल में है. सो द लाइसोजेनिक साइकिल इज ऑल्सो इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम स्टेप्स. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप्स जो इसके फर्स्ट और सेकेंड स्टेप जो है उसके same as lytic cycle. First and second step, which are uh, attachment and penetration of genome. Attachment and penetration of genome are the same steps of lytic cycle and same in lysogenic cycle. These are the most two common steps in both. इसमें पहले attachment होती है और penetration of genome होती है. After the penetration of genome हमारे पास third step आता है integration of DNA. So integration of DNA में क्या होता है? Suppose here ये हमारे पास एक so consider this is a cell
of this is a cell of bacteria. Here it's genome. So here the bacteriophage came, the integration, not integration, the penetration of genome. Here its genome is done. Here it is genome. This is the genome of phage, and this is the bacterial DNA. B B D. BD means bacterial DNA. Okay, so now this DNA, there is a cell. This DNA will integrate with this DNA. Integrate मतलब ये दोनों DNA mix up होंगे. See, this green shows the bacterial DNA, and this black color shows the phage DNA. So this is how these are integrated. This is how these are integrated. Both DNAs are integrated here. Both DNAs are integrated. So the third step of lysogenic cycle हमारे पास है integration of DNA. The DNA of the viral genome and the host genome both integrated with each other, and this integrated DNA, जो integrated DNA बना है, this is called prophage. Pro prophage. This is called prophage. 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 So the integrated DNA of host and phage is known as prophage. Now the fourth step we have, हमारे पास फोर्थ स्टेप इसका आता है replication and cell division. Replication and cell division. So in this step, let me erase this one. Okay. So in the fourth step, the cell, here this is a cell having integrated DNA. Now this cell goes into the division. So this cell is going into a division. So now this cell is dividing into two cells. By the division of cell, the integrated DNA is also replicated. It's also divided, or we can say replicated. So this is how the replication and cell division occurs. Now here we have two DNAs, two bacteriophages, two we can say cells. Now this will again go in the division, and this is how the copies or the replication of DNA occurs with the help of cell division. This is how the replication occurs. So this is the process of replication and cell division. The integrated cell is divided and replicated, and making its multiple copies. Now in the last, when it is done with its division, now this I'm making here, when it is done with its replication and division,
this is uh, one step, and second step penetration, absorption, attachment and penetration. This is the integration third step, and this is the fourth step, cell division, yeah, replication we can say. Okay, cell division or replication. So द फिफ्थ स्टेप हमारे पास होता है इसमें, फिफ्थ स्टेप तो है एक्टिवेशन ऑफ जीन, एक्टिवेशन ऑफ जीन्स ऑफ द phage, activation of genes of the phage, activation of the genes of phage. Now this divided cell, consider this divide, these are the dividing cells, this is the integrated DNA. Okay, so the unfavorable conditions such as chemicals or the UV radiations, the chemicals or the UV rays, you can say chemicals or UV rays, when these are affecting these cells, these are affecting by these unfavorable conditions, the cell by these unfavorable conditions, by favorable conditions such as chemicals or UV radiations, UV rays or UV radiations or UV rays. By these unfavorable conditions, the genes of phage activate. By these unfavorable condition, the genes of the phage एक्टिवेट हो जाते हैं इनमें, द डीएनए का जो बैक्टीरियोफेज के जो जीन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. नाउ सी हियर, suppose this is the DNA, integrated DNA. By these such conditions, this the inactivate genes of this are activated. Now by this these condition, some changes by this condition, some changes in DNA. Some changes come in DNA. इन कंडीशन की वजह से कुछ चेंज आता है डीएनए में. बाय चेंज ऑफ द डीएनए synthesize an enzyme called endonuclease. Endonuclease is an enzyme जो डीएनए सिंथेसाइज करता है, इंटीग्रेटेड डीएनए सिंथेसाइज करता है. जब अनफेवरेबल कंडीशन उन पर एक्ट करती है, जब उनके जीन्स एक्टिवेट कर देती है, तो some changes in DNA synthesize an enzyme called endonuclease, which is responsible for restriction, of DNA. And now DNA is isolated. फर्स्टली क्या होता है, इन द फिफ्थ स्टेप अनफेवरेबल कंडीशंस जीन्स को एक्टिवेट करती हैं. फिर एक्टिवेट जब जीन्स होते हैं तो देयर आर सम चेंजेस विच कम्स इन डीएनए. बिकॉज ऑफ द चेंजेस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक एंजाइम है जो सिंथेसाइज होता है
और इन एंजाइम ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ डीएनए या रेस्ट्रिक्शन ऑफ जीनोम, आप लिख सकते हैं जीनोम, रेस्ट्रिक्शन ऑफ जीनोम। और ये जीनोम जो है वो डीएनए को आइसोलेट करता है, डीएनए को आइसोलेट करता है। अभी जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए होगी वो इस तरह होगी, देखिए दिस इज अ सेल, नाउ this is the DNA and this is, now these both DNAs, the integrated DNA has been isolated, integrated DNA, now integrated DNA has been isolated, here the integrated DNA has been isolated, ये टूट गया है, isolation मतलब एक जुड़ी हुई चीज़ टूट जाना। so this integrated DNA has been isolated, ये isolate हो गया है, or this is the process of isolation. By this isolation of DNA, now this cell, this phage, जो ये phage है, जो bacteria है, now this goes into the lytic cycle, lytic phase, lytic cycle you can say, or lytic phase. Now this will work as a lytic phase, ये isolated DNA lytic phase में जाएगा, जिसमें this bacterial genome will, ने पढ़ा है कि this bacterial genome will degrade, इसको bacterial genome को degrade कर देगा, degrade। so ये जो bacterial phage genome will degrade the bacterial genome and control its activity and make the structural components, फिर होती है assembly, structural components की जो protein के component बनते हैं उसकी assembly होती है, and then maturation, after maturation the lysis of these new daughter phages, phages की lysis होती है। तो this after the isolation of integrated DNA, after the isolation of integrated DNA, this cell, this DNA goes into a lytic phase। so ये होती है हमारे पास lysogenic cycle। let's give an overview। so हमने पढ़ा कि lysogenic cycle is the cycle occurs in lambda phases, host and guest cycle। phases are inactive, don't, which means don't infect the cell, इसीलिए इसको कहते हैं होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। जैसे इन द फर्स्ट 4 स्टेप्स ये आया जब होस्ट गेस्ट आया, जब बैक्टीरियोफेज वो जस्ट इंटीग्रेटेड विद द होस्ट जीनोम, वो इंटीग्रेट करके बैठा था। जब तक कोई अनफेवरेबल कंडीशन नहीं आती, जैसे केमिकल्स और रेडिएशन में इफेक्ट नहीं करती, तब तक उसके जीन्स एक्टिव नहीं होते। सो that's why this is called host and guest relationship। and phages genes are inactive, do not affect the cell। first step we have same attachment and penetration of genome। attachment होती है उसकी टेल फाइबर्स की वजह से, और बेस प्लेट में पिन्स होती हैं, वो होल्ड करती हैं बाय विच जीनोम हैज बीन पेनिट्रेटेड। और आफ्टर पेनिट्रेशन द डीएनए, penetrated DNA is integrated with the DNA of this host cell, which is called as prophage। after the prophage, after the third step, the replication and cell division occurs। in the result of cell division, the DNA, integrated DNA is also replicated, after this replicated DNA, integrated DNA which is replicated, if there are some unfavorable conditions uh, such as chemicals or radiations, UV rays we have seen, so when these are acted on a cell, so these bring some changes in DNA, by which DNA release an enzyme, synthesize an enzyme called endonuclease, जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ डीएनए करता है, रेस्ट्रिक्शन करता है इंटीग्रेट डीएनए की। बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन द डीएनए आइसोलेट होता है, और देन द आइसोलेटेड डीएनए इज गोन इनटू अ लाइटिक फेज।